Hello students, good morning you to all. Previous class रे हमें माने 5 kingdom classification बाबदरे आलोचना करूथिले. 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom classification and lastly 6 kingdom or 3 domains of life by Carl Woese in 1990. But आमे detail description करूचे कहारो 5 kingdom classification classified by R.H. Whitaker in 1969. And the 5 kingdoms are Munira, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. And his basis of classification was on what basis R.H. Whitaker classified all the organisms into 5 kingdoms also we have discussed. And what are they? Number 1 is your type of cell they contain. They means the living organism contains which living organism contain what type of cell. Number 1. Number 2, complexity in their body structure. How far their body organization is simpler with one cell or very much complex with many cells. Number 3, whether cell wall present or absent. Number 4, mode of nutrition, whether autotrophic mode of nutrition or heterotrophic mode of nutrition. And lastly, above all, trends in evolution. So this is the 5 kingdom classification. So आमे देखिबा 2 kingdom classification and 5 kingdom classification. What is the difference? In 2 kingdom classification, the 2 kingdoms are plants and animals. This is 2 kingdom. (1757). But 5 kingdom 1969. So 5 kingdom रे जो रहिला मुनिरा रे जो माने प्रेजेंट वर्तमान तांकर प्रीवियस किंगडम थिला कोन ना प्लांट एंटायरली. All the Munirans, they were previously present in plant kingdom. Fungi, they were also present in entirely in plant kingdom. Plantae also they were present in previous plant kingdom. Protista, some of them from plant kingdom, some of them from animal kingdom. And finally Animalia, so-called animals, they all were present in previous kingdom animal. पिला माने ठीक जेमिति 1993 रे हमर 13 टी जिल्ला थिला. 1993 बिफोर 13 टा जिल्ला थिला. 93 रे 30 टा जिल्ला हला. फॉर एग्जांपल जेमिति पुरी डिस्ट्रिक्ट टी डिवीजन है नयागढ़, खोर्धा, पुरी हला. ठीक सेमिति प्लांट किंगडम टी डिवीजन हुई मुनिरा बाहरला, फंजी बाहरिला, प्लांटाए बाहरिला, सम ऑफ द प्रोटिस्टान. तमाने वर्तमान जो माने मुनिरा किंगडम रे, फंजी किंगडम रे, प्लांटाए किंगडम रे पछंते, they were previously present entirely in plant kingdom.
वर्तमान जो माने प्रोटिस्टा किंगडम रे अछंती किछि प्लांट्स रु आछंती किछि एनिमल्स रु आछंती एवं से अनुसार आमे प्रोटिस्टा को पुणी तीन भाग रे विभक्त करिचे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा एंड प्रोटोजोन प्रोटिस्टा प्रोटोजोन protista. So these three groups, those remain in kingdom protista, these two, photosynthetic protista and consumer decomposer protista, these three groups, they are classified on the basis of their mode of nutrition. Mode of nutrition. Their autotrophic mode of nutrition, their saprotrophic mode of nutrition, their ingestive heterotrophic mode of nutrition. Rather producer, consumer and decomposer. So among the three groups, photosynthetic protista, they previously remained in plants. Consumer decomposer protista also present in plants. So protozoan protista, only the group departed from animal kingdom, and the rest all they remained in kingdom Animalia. So this is the picture of two kingdom classification and five kingdom classification. So वर्तमान तेणु आमे जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कले सेमानकर प्रीवियस जगह एई मुताबक मुनिरा रे जो माने अछंती से माने प्रीवियसली प्लांट रे थिले, फंजी रे वर्तमान जो माने अछंती प्रीवियसली प्लांट रे थिले, प्लांटाई रे जो माने अछंती से माने प्रीवियसली प्लांट रे थिले, प्रोटिस्टा किंगडम रो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा से माने भी प्लांट रे थिले एवं प्रोटोजोन प्रोटिस्टा एवं एनिमालिया एमाने दी जण एनिमल. सो स्टूडेंट्स एनिमल किंगडम टी टू किंगडम रो एनिमल किंगडम टी डिस्टर्ब हेनी बेसी केवल सेइथिरु गोटे ग्रुप जोटा को आमे फाइलम प्रोटोजोआ कहिबा से बाहरी जाईची प्रोटोजोन प्रोटिस्टा हिची रेस्ट जेमिति सेमिति अछन. तेणु वर्तमान आमे जदि ए समस्त को पढ़िबा एनिमल को पढ़िबा आमे प्रोटोजोन प्रोटिस्टा एवं एनिमालिया एमान को नै क्रिया में पिला माने जीवा कोठी की किंगडम एनिमल. So let's see what is animal kingdom and how they are further classified. How they are further classified. So पिला माने से किंगडम एनिमल रे एनिमल टू किंगडम रो किंगडम एनिमल और फाइव किंगडम रो एनिमालिया एंड प्रोटोजोन प्रोटिस्टा की प्रकार गोटे सजीव व्हाट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन इन दिस किंगडम. एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम की प्रकार सजीवटी पिला माने आरि भितरे इनक्लूड हला ना ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म with one यूकारियोटिक सेल हिथिबो, सेल रे हिथिबो यूकारियोटिक, यूनिसेलुलर
और मल्टी सेलुलार ही थिबो, not having cell wall, not having cell wall, and ingestive heterotrophic, ingestive heterotrophic mode of न्यूट्रिशन परफॉर्म करुथिबो। एमितिया ए गुण जेते सजीव धरिचंती टाइप ऑफ सेल गुण रे यूकारियोटिक हेतिबो, कॉम्प्लेक्सिटी रे यूनिसेलुलारिटी और मल्टी सेलुलारिटी हेतिबो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल रे सेल वॉल नथिबो, इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करुथिबे। ऑल दिस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड whose number is 1.2 million type, millions type, 1.2 million 12 लक्ष प्रकारर एभली सजीव अछंती। सो ताकू आमे पुणी क्लासिफाई करिबा। एंड ए संख्याटी भी एते छोट नुह जे वी स्टडी देम ऑल एट देयर इंडिविजुअल लेवल, unless we classify them, unless we classify them we cannot study them all at their individual level. So before going to classify that living, that animal kingdom, let's discuss another topic, the taxonomical hierarchy. The taxonomical hierarchy. What is the taxonomical hierarchy? It is the systematic representation of various organisms at different taxa, different levels. What is that? Kingdom, first of all the type of living organisms, they are classified into either to 2 kingdom or 3 kingdom or 4 kingdom or 5 kingdom. So first of all, kingdom remain is in highest taxonomic position. Just like all the land in the universe divided into 7 continents, like that all the living organisms, they are classified into 2, 3, 4, 5, 6, like that. But that is kingdom. The kingdom further classified into division in case of a plant, or phylum in case of animal. If the kingdom is plant kingdom, then plant kingdom divisible into 2 broad division, cryptogames and phanerogames. And if the kingdom is animal kingdom, it is classified into different phyla. Further, division or phylum again classified into class into order into family into genus into species, and kingdom is in highest taxonomic position, highest
taxonomic position and species is in lowest taxonomic position. Lowest taxonomic position. Each one of them is a taxon, is a level, taxon, a rank or level. And there are 7 obligatory taxa. Obligatory taxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 obligatory taxa, where kingdom is in highest taxonomic position and species is in lowest taxonomic position. So who can be a species? Who can be a species? That is another part, students. Species may be defined as a group of interbreeding population. Those can breed among themselves in nature. Those are having many characteristics in common and differing from other groups in the field of reproduction. So simply, who can be a species? Those can breed among themselves in nature. That can be a species. But our topic is classification of animal kingdom. So, animal kingdom further classified into several phyla and 11 phyla. Basically is classified into, students, 1 non-chordata and chordata. पिला माने ये गोटे क्लासिफिकेशन आमे एथिरे बुझिले आउ टिके कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन को जिबा आमे जोटा रिसेंट क्लासिफिकेशन मिसोजोआ पाराजोआ मेटाजोआ मिसोजोआ पाराजोआ मेटाजोआ जोटा को आमे डिफरेंट लेवल्स को नेकरी क्लासिफिकेशन करिचे तांकर सिमेट्री को तांकर जर्म लेयर को तांकर सिलोम को भित्ति करी आमे क्लासिफाई करिचे बट जो थे आमे बुझी परिबा आगे ताकू जाइकरी तापरे आमे सेठी की जिबा जेते बेले डाइवर्सिटी को आमे आसीबा सो पिला माने आमे आगो सरल भाव रे आगो टिके बुझिबा आमे एनिमल किंगडम को एभली आगो दुई भाग रे विभक्त करिचे नॉन कोडाटा कोडाटा जदियो आमे माने भी सेही क्लासिफिकेशन को जाउचे पुणी आसीबा सेठी की नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स सो लेट्स सी व्हाट इज नॉन कोडाटा एंड कोडाटा नॉन कोडाटा absence of notochord and chordata presence of notochord so पिला माने एबे तम मनरे गोटे प्रश्न आसीबनी व्हाट इज द notochord जहार प्रेजेंस एब्सेंस को लेकर आम ताको दुई भाग रे विभक्त कले व्हाट इज दैट नोटोकॉर्ड ऑन हुज एब्सेंस दे आर कॉल्ड नॉन कोडाटा एंड हुज प्रेजेंस दे आर कॉल्ड कोडेट्स बिफोर explaining about notochord, do you know what is vertebral column? Vertebral column. Vertebral column is the columnar structure
consisting of a numbers of loose bone कहते 26 or 33, a numbers of loose bone called vertebrae to protect the most vital part, the spinal cord. So पिला माने अंतत वर्टिब्रल कलम कौन तुमे माने जानी थिबो, कौन न जानिले भी मेरुदंड टी अछि बोली अंतत जानी थिबो. And what is that merudanda? What is that vertebral column? Vertebral column, a columnar structure, pillar like structure made up of 26. What 26? When during infants there are 33 numbers of vertebrae, but in adult there is a 26 number of vertebrae. So a number of loose bone called vertebrae that forms one column like structure, pillar like structure, that is called vertebral column, inside which your spinal cord lies in safe. It is well protected. All our vital organs, they are well protected. Like your spinal cord is well protected with that vertebral column. तमे भाबु तुम वर्टिब्रल कलम संगे नोटोकॉर्ड रो कौन संपर्क? पिला माने नोटोकॉर्ड इज योर preliminary stage or primitive stage of vertebral column. It is the preliminary stage or it is the primitive stage of vertebral column. That means नोटोकॉर्ड पिला माने आद्यावस्था, vertebral column होची परवर्ती अवस्था. So notochord perform the same work but during in embryonic condition. So जने पचारिबा आम पाखरे नोटोकॉर्ड अछि ना नाही, ना अछि. आम पाखरे vertebral column अछि ना अछि. Show me your notochord जने पचारिबो ना. Notochord was present during embryonic condition and that replaced by vertebral column in adult. So this is notochord and this is vertebral column. So जो notochord तार absence रे आमे ताकू कहउचे non chordata, तार presence रे आमे ताकू कहउचे chordata. तेनो सेही notochord जो माने non chordata से माने पुनी 10टा फाइलम रे रहिले. All that 10 phyla they do not have the notochord, neither notochord nor vertebral column. Phylum 1 Protozoa, Phylum 2 Porifera, Phylum 3 Nidaria or Coelenterata, Phylum 4 Platyhelminthes, Phylum 5 Nemate or Aschelminthes, Phylum 6 Annelida, Phylum 7 Arthropoda, Phylum 8
मोलुस्का, फाइलम 9 एकाइनोडर्माटा, फाइलम 10 हेमिकोडाटा and phylum 11 Chordata. So students, animal kingdom is broadly classified into 11 phyla: Protozoa, Porifera, Nidaria or Coelenterata, Platyhelminthes, Nematohelminthes or Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. तुम्हें आपको 9th क्लास रे पढ़ीच. ओके, सो आमे नेक्स्ट क्लास रे आरो आगो को जीवा. आमे वर्तमान एबे क्लास क्लासिफाई कर देले. नेक्स्ट आमे कोडाटार क्लासिफिकेशन करिबा एवं समस्तंकर आमे किछि किछि कैरेक्टरिस्टिक पढ़िबा. सो आज पिला माने एतिकी. थैंक यू.